Hello students, welcome back to English literature classes. Today our topic is Lord Chesterfield. Okay, critical appreciation Johnson's letter to Lord Chesterfield. Okay student, so our topic is Lord Chesterfield. Dr. Johnson is one of the greatest literary figure in English literature. Okay, Johnson's monumental contribution to English is the Dictionary of the English language. Okay, it was published in 1755. 1755 में ये पब्लिश हुआ था. ओके, तो डॉक्टर जॉनसन कौन है? ग्रेटेस्ट लिटरेरी फिगर है किसमें? इंग्लिश लिटरेचर में. ओके, जॉनसन का जो मॉन्यूमेंटल कंट्रीब्यूशन है टू द इंग्लिश में इज द डिक्शनरी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज. ओके स्टूडेंट, जॉनसन का मॉन्यूमेंटल जो कंट्रीब्यूशन है टू इंग्लिश में इज द डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड इट वाज पब्लिश्ड इन 1755. 1755 में ये पब्लिश हुआ है. एंड द डिक्शनरी इज द मेन कॉज ऑफ जॉनसन्स लेटर टू लॉर्ड चेस्टरफील्ड. जो द डिक्शनरी इज द मेन कॉजेज ऑफ The dictionary is the main causes of Johnson's letter to Lord Chesterfield. The letter was written on 7 February 1755. ये जो लेटर है वो इनका 7 फरवरी 1755 में लिखा गया है. It happened that Lord Chesterfield wrote 2 articles to support Dr. Johnson's a dictionary of English language in paper called the वर्ड. ये जो लेटर है वो इनका 7 फरवरी 1755 को लिखा है. एंड इट हैपेंड, और ये अचानक से हैपन हुआ है दैट लॉर्ड चेस्टरफील्ड रॉट 2 आर्टिकल्स. लॉर्ड चेस्टरफील्ड ने 2 आर्टिकल्स लिखे हैं. ओके, टू सपोर्ट, किसे सपोर्ट करने के लिए? सपोर्ट करने के लिए किसको? डॉक्टर जॉनसन्स ए डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड इन ए पेपर. किसमें? पेपर में. ओके, दी वर्ड. These articles by Chesterfield hurt the ego of Johnson. और ये जो आर्टिकल्स है इनका चेस्टरफील्ड का, ये हर्ट करता है जॉनसन्स के ईगो को. ओके, लॉर्ड चेस्टरफील्ड हैड निग्लेक्टेड हिम. जबकि लॉर्ड चेस्टरफील्ड ने उनको निग्लेक्ट कर दिया था. when he had visited Chesterfield in hope of his financial support to the great work. जब वो चेस्टरफील्ड से मिलने गए थे किस आशा में? कि उनकी जो फाइनेंशियल सपोर्ट है वो एक ग्रेट वर्क है उनका. ऑन पेपर चेस्टरफील्ड वॉज पैटर्न ऑफ द पब्लिकेशंस ऑफ द डिक्शनरी. प्रैक्टिकली ही डिड नथिंग फॉर द पब्लिकेशंस ऑफ द डिक्शनरी. लॉन्ग 7 years were spent in the publication of the dictionary. काफ़ी लंबे समय तक, मतलब 7 साल कम से कम खर्च हो गए थे इसमें डिक्शनरी को पब्लिश होने में. When Chesterfield wrote 2 articles, जब चेस्टरफील्ड ने 2 आर्टिकल लिखे इन द फ्रेजेस ऑफ द डिक्शनरी की प्रशंसा में. ओके, जॉनसन wrote his letter to complain to Chesterfield. जॉनसन ने यह लेटर लिखा चेस्टरफील्ड को शिकायत करने के लिए. दैट ही डिड नॉट गिव
नेक्स्ट पॉइंट है इनका कॉजेज ऑफ जॉनसन्स लेटर टू लॉर्ड चेस्टरफील्ड। जॉनसन्स began work on his dictionary 1746. Lord Chesterfield was a noted patron of the arts. Johnson visited Chesterfield, but according to Johnson's letter, he was kept waiting for a long time and was not treated well by Chesterfield when they meet. Okay, Chesterfield sent Johnson's Elphiston, but offered no greater help to Johnson through the even long years it took him to compile the dictionary. After 7 years from first meeting, Johnson's to go over the work, Chesterfield wrote to anonymous essay in the Word that recommended the dictionary. Johnson did not appreciate the tone of the essay and he felt that Chesterfield did not complete his job as the work's patron. In the following letter, Johnson explained his feeling about the matter. Okay, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ए लेटर ऑफ थैंक्स। इट इज द लेटर ऑफ थैंक्स फ्रॉम डॉक्टर जॉनसन टू लॉर्ड चेस्टरफील्ड। डॉक्टर जॉनसन मेक्स ए कंप्लेन दैट चेस्टरफील्ड हैज नॉट डन justice to him as the patron to his dictionary. He has been recently informed by the owner of the paper Word that Lord Chesterfield had published 2 articles in the favor of Dr. Johnson's dictionary. He has recommended the dictionary to the public. Dr. Johnson claimed that he has no experience of getting such honors from the great people like Lord Chesterfield, and he does not know how to pay thanks for it. नेक्स्ट पॉइंट है आपका ए लेटर ऑफ कंप्लेंट। It is a letter of thanks. Dr. Johnson's to Lord Chesterfield. Dr. Johnson makes a complaint that Chesterfield has not done justice to him as the patron to his dictionary. Okay. Next point है justification of his attitude. To justify his bitter attitude to Lord Chesterfield, Johnson refers to the classical poet Virgil. Chesterfield's letter to support his dictionary remind him of Lycidas. This appeared in Virgil's ninth eclogue, who suffered from social injustice and wonders in rocks. When he became a native of rocks, he was loved. According to Johnson, a patron should have taken care
when he was struggling. Now the struggle is over. Now he does not need Chesterfield's obligation. Okay, next point है high sense of self-respect and pride. The latter shows Johnson's high sense, self-respect and pride. When he started the project of dictionary, he was too afraid for the task was great and his means were limited. He therefore expected great help from Lord Chesterfield, but he got no help from Chesterfield. Now, 7 years have passed to the incident. During these 7 years, Johnson has struggled hard to finish his dictionary. Okay, and the next is conclusion. Thus, the letter tells us about Johnson's struggle in getting the dictionary published on the one hand and his high sense of self-respect and pride on other. Okay? लैम्ब इस निबंध को अपनी बीमारी के वर्णन के साथ आरंभ करता है। एक वर्णन प्रस्तुत करने के बाद वो बताता है कि कैसे स्वास्थ्य लाभ बीमार व्यक्ति की स्थिति में गिरावट लाता है। ओके, क्योंकि बीमार व्यक्ति की स्थिति के संबंध में एक सार्वभौमिक सत्य ये भी बताता है कि वो ये कहना चाहते हैं कि बीमारी बाह्य दुष्प्रभाव से बचाती है। बीमारी एक कवच के समान है, वह संसार की बातों की बहुत कम चिंता करता है। ओके, दिस स्टेट एडवर्सली अफेक्ट्स द पॉइजन ऑफ ए सिक मैन। ओके, so thank you for watching my YouTube channel. Thank you so much.